नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु उपस्थापिका शोभना मिश्र। आज सुंदर अवसर में आपण समस्त को हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। 30तम एकलव्य पुरस्कार 2022 में मु अनुरोध करी आम समस्ते जोरदार करताली दे आरंभ कर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रीड़ा क्षेत्र में आम देश तथा आम राज्य को गौरवान्वित करिथिबा युव क्रीड़ाविद माननकु उत्साहित करिवार एवं सम्मानित करिवार आमर यही प्रयास दीर्घ 30 वर्ष धरी यही धारा बजाय रही आछि। अनेक क्रीड़ा प्रतिभा को सम्मानित करी सेमानंकु आगकु बढ़िबारे उत्साहित और प्रोत्साहित करी आछि इम्पैक्ट। यही अवसर में एठारे उपस्थित मान्यवर अतिथिवृंद, क्रीड़ाप्रेमी, गणमाध्यमर बंधु, राज्यर उदीयमान क्रीड़ाविद, विगत वर्षर एकलव्य पुरस्कार विजेता एवं निमंत्रित अतिथि माननकु बहुत बहुत स्वागत जनाउछु। तेबे आज विशेष अवसर रे आम गहणार उपस्थित थिबा आज आमर मान्यवर मुख्य अतिथि वरेण्य सम्मानित अतिथिवृंद को वर्तमान मंच उपरको स्वागत जणाइबार समय हो जाइछि। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स अ प्राउड प्रिविलेज to have amongst us as our honorable chief guest of 30th Ekalabya Puraskar 2022, the golden boy of India, the master cueist, the only Indian to have won world title in both snooker and billiards, the first Indian world champion in 6 red snooker and international billiards and snooker federation IBSF world champion with 24 world titles, 12 Asian titles and 34 national championships. Please welcome Padma Bhushan Mr. Pankaj Advani on the stage. Now it's time to welcome our esteemed guest of honor on the stage, the first woman athlete from the state to have won an Asian medal, the very popular sprinter, our girl Pranati Mishra. Let's have you on the stage, please. वर्तमान मंच रे आमे स्वागत जणाइबु द कन्वेनर एकलव्य पुरस्कार कमिटी श्री किशोर मोहांती. Now we will invite on the stage our source of inspiration, our source of energy, trustee impact and chairperson Ekalabya Puraskar committee Shri Baijayanta Panda. Let's welcome him on the stage. आम गहणार मध्य उपस्थित अछंती आम पई गर्वर विषय जे एकलव्य पुरस्कार विनर, national and international cyclist Swasti Singh. Let's have you on the stage, please. समस्तों को बहुत बहुत स्वागत. We welcome everyone with a warm heart on the stage. Now I would like to request our convener Shri Kishore Mohanty to kindly come over to the podium and offer the welcome address. The chief guest Padma Bhushan Shri Pankaj Advani ji, guest of honor Srimati Pranati Mishra, Shri Baijayanta Panda, chairperson Ekalabya Puraskar committee and trustee impact. Respected members of the jury, sportsperson across all disciplines, coaches, distinguished guests, media persons, and last but not the least, sports enthusiasts. On behalf of Indian Metal Public Charitable Trust Impact, I welcome you all to this award ceremony. Impact, which is charitable wing of Infra Group, was formed in 1974 under the auspices of Dr. Banshidhar Panda and Srimati Ila Panda, with a noble mission to promote literature, culture, sports and social activities in the state. Ekalabya Puraskar was instituted way back in 1993 to encourage young sportspersons of our state for their outstanding performance. Since then, the legacy continues and sporting legends who have received the Ekalabya Puraskar have gone on to create history. The purpose of Ekalabya Puraskar is to motivate, to spur an exceptional individual to excel. It gives us great satisfaction to see that our efforts have not been in vain. It is with great pleasure I congratulate Ms. Swasti Singh for her feat in cycling and the winner of 30th Ekalabya Puraskar, and citation recipients Ms. Perry Khaka, who is an ace footballer and formidable player in the Indian team, and Mr. Shilanand Lakra, one of the promising forwards of Indian men's hockey team.
That's all. Bande Utkal Janani, Jai Hind, Jai Jagannath. बहुत बहुत धन्यवाद श्री किशोर महांती, कन्वेनर एकलव्य पुरस्कार कमिटी. So in order to encourage the sports persons and the sports enthusiasts only, Ekalabya Puraskar has been conceived and has been going on. How long has it been going on? 30 years. How has been the journey? Let us have a look. Please play the audio visual. सम्मानजनक एकलव्य पुरस्कार प्रतिभावान ओडिया क्रीड़ाविद को सम्मानित करिबार ए प्रयास जार मूलदुआ पड़िथिला 1993 मसीहारे पूर्व भारतर प्रमुख फेरो आलोइज कंपनी इम्फा ग्रुप द्वारा परिचालित इंडियन मेटाल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट इम्पैक्ट प्रतिवर्ष एही सम्मान प्रदान करि आसुछि। दीर्घ 30 वर्षर गौरवमय इतिहास एही शुभ अवसर रे आसंतु नजर पकाई नेबा विगत वर्षरे ए मंचरे केउमाने होइथिले सम्मानित। 1993 मसीहा ओडिशार गर्व और गौरव दौड़राणी रचिता पंडा मिस्त्री ठारू आरंभ हुए एही यात्रा। ए धारारे 1994 रे हॉकी खेलाड़ी ग्लोरिया डुंगडुंग, 1995 रे क्रिकेटर शिवसुंदर दास, 1996 रे भारतीय हॉकी दलर पूर्वतन अधिनायक दिलीप तिर्की, 1997 रे क्रिकेटर संजय राउलंकु एही मंचरे सम्मानित करा जायथिला। सेही भली 1998 रे पूर्वतन अंतर्जातीय क्रिकेट तारका देवाशीष मोहांती, 1999 रे हॉकी खेलाड़ी लाजरुस बार्ला, 2000 रे एथलीट अनुराधा विश्वाल, 2001 रे क्रिकेटर रश्मिरंजन परिडा, 2002 रे भारतीय हॉकी दलर पूर्वतन अधिनायक प्रबोध तिर्की, 2003 रे इग्नेश तिर्की एवं 2004 रे विलियम खालको सम्मानित होइथिले एकलव्य पुरस्कार रे। धीरे धीरे एही क्रीड़ाविद माने जातीय और अंतर्जातिक स्तर रे ना कमाइबा सहित मेडाल भी जितिबा को लागंती आउ आम राज्य पई बनि जांती गर्व और गौरव। ए धारारे 2005 रे महिला हॉकी खेलाड़ी सुभद्रा प्रधान, 2006 रे रोइंग टैलेंट प्रभासिनी द्विवेदी और 2007 रे ममता जेना को एही पुरस्कार रे संबर्धित करा जायथिला। सेही भली 2008 रे वुमेन ग्रैंड मास्टर पद्मिनी राउत, 2009 रे भारोत्तोलक के रवि कुमार, 2010 रे चेस क्रीड़ाविद किरण मनीषा मोहांती, 2011 रे रोइंग टैलेंट प्रतिमा पुहाण, 2012 रे चेस खेलाड़ी देवाशीष दास, 2013 रे इंडियन शूटर श्रीयंका सड़ंगी, 2014 रे महिला हेप्टाथेलन एथलीट पूर्णिमा हेम्ब्रम, 2015 रे स्प्रिंटर तथा ओलंपियन दूती चांद, 2016 रे ट्रैक क्वीन तथा ओलंपियन श्रावणी नंद, 2017 रे हॉकी खेलाड़ी दीपशान तिर्की को मिलिथिला सम्मानजनक एकलव्य पुरस्कार। सेहीपरि 2018 एकलव्य पुरस्कार विजेता थिले महिला हॉकी खेलाड़ी लिलिमा मिंज, 2019 रे महिला भारोत्तोलक झिली दल बेहरा, 2020 रे महिला हॉकी खेलाड़ी नमिता टप्पो एवं 2021 रे एही पुरस्कार रो विजेता थिले महिला बैडमिंटन खेलाड़ी ऋतुपर्णा पंडा। ए धारारे 2022 रो सम्मानजनक एकलव्य पुरस्कार विजेता हेउछंती जातीय और अंतर्जातीय स्तरर ना करा साइकेल चालिका स्वस्ति सिंह। दीर्घ 30 वर्षर सफलता राज्यर प्रतिभादीप्त क्रीड़ाविद मानंकु रीतिमत भावे क्रीड़ा प्रति आकर्षित कराइबा एवं प्रोत्साहन जरिया सेमानंक स्वप्न को सार्थक करिबारे बलिष्ठ भूमिका नै आसुछि चैरिटेबल संस्था इम्पैक्ट। तेबे आगु को बढ़िबा मंचरे आम सहित उपस्थित अछंती आमर सम्मानित अतिथि फर्स्ट वुमेन एथलीट फ्रॉम द स्टेट टू हैव वन एन एशियन मेडल द स्प्रिंटर मैडम प्रणति मिश्र। मैडम को मुहरु आजिर संध्यारे किछि शब्द निश्चय सुनिबा किंतु ता पूर्वरु आसंतु एक ऑडियो विजुअल देखिनबा। ओडिशार गर्व एवं गौरव प्रणति मिश्र बलांगीर जिले में जन्मित ए एथलीट एशियाड मेडाल लाभ करिबारे राज्यर प्रथम महिला क्रीड़ाविद। कठिन परिश्रम एवं अध्यवसाय बल से क्रीड़ा जगतर शीर्ष रे पहुंचबारे सफल होइछंती।
1990 बेजिंग ठारे अनुष्ठित एशियन गेम्स रो 400 मीटर रिले रेस रे सिल्वर मेडल हासिल करथिले प्रणति। पीटी उषा, कुटी शर्मा, शांतिमल फिलिप्स को सह प्रणति मिश्र 4x400 मीटर रिले रेस रे भाग नेथिले। 1988-89 रे नुआदिल्ली रे अनुष्ठित परमिट मीट रे उभय 400 मीटर एवं 4x400 मीटर रिले रेस रे से रौप्य पदक हासिल करथिले। 1987-88 रे सिंगापुर अनुष्ठित जूनियर एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप रो 400 मीटर रेस रे से चतुर्थ स्थान लाभ करथिले। सेही वर्ष चेन्नई रे अनुष्ठित परमिट मीट रो 4x400 मीटर रिले रे तांको मिलिथिला स्वर्ण पदक। सेही भली 1989-90 रे सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियंस रो 400 मीटर रे स्वर्ण एवं 200 मीटर रेस रे सिल्वर मेडल हासिल करथिले प्रणति। 1988-89 रे सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियंस रो 400 मीटर रे स्वर्ण एवं 200 मीटर रेस रे सिल्वर मेडल हासिल करथिले प्रणति। 1992 रे आंठुरे आघात जोगु ओलंपियान हेबार सौभाग्यरू प्रणति मिश्र वंचित होइतिले। एभली जड़े अनन्य क्रीड़ा प्रतिभांकु 30तम एकलव्य पुरस्कार समारोह रे सम्मानित अतिथि भावे पाई इम्पैक्ट निजुकु गौरवान्वित मन करुछि। वर्तमान मु अनुरोध करी मैडम प्रणति मिश्र महोदय को आम समस्त उद्देश्य रे निजर अभिभाषण रखिबे। गुरुजन वृंद भाई और भौणी मैंने जो मैंने जी प्रेजेंट अच्छा एक्चुअली मु कौन सी एमती फंक्शन रे आसी के भाषण देनी एते दिन पर मते सारे आज मन पकईचंती सेतपय मु सार को बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहीं 90 सेते बेले तो आउ एई मीडिया एते प्रचार नथिला। आमे सेते बेले जस्ट खाली गोटे एई फोटो मते एते संग्रह करिया पई कि मते लागि जाइथिला बहुत समय कहीं मो पाखरे फोटो नथिला। सेते बेले कि जानी नथिले जे केमिति कोन स्पोर्ट्स करा जाए केमिति कोन आमे निजे घरे निजे भीतर स्टार्ट हे करी आस्थिलु। मो स्कूल ले जते बेले एमति खाली दौड़ुथला बेले दौड़ुथली सेमति ही दौड़ी की आस्थिली। फास्ट केमिति हुए कोन पिंदी की रनिंग करबा को पड़े कोन करिया पड़े सेउडा को मोर किछि जणा नथिला। नॉर्मल केट्स पिंदी के मु आरंभ करथिली स्पोर्ट्स तेबे कि मो पाखरे नथिला सेता बेले स्कूल जोता जो पीटी टीचर जेता बेले हमको जो पीटी ट्रेनिंग जेता बेले दिया जाए सेठू मु आरंभ करथिली। आ गोटे बलांगीर आपण जानिथिबे बलांगीर बहुत माने छोट जगह सेता बेले एबे टिके आउरी डेवलप हलानी सेता बेले बहुत छोट थिला केही सेठी एते गोटे भितरु केही आसी कि आसीबा पे केही बापा माँ भी बाहर को छाडू नथिले काने दैट गोटे झियो झाड़ू नथिले सेमती आसती कि बलांगीर जिते स्टाडियम थिला सर गांधी स्टाडियम से स्टाडियम रे पत्थर गोड़ी गोटे गोटे आम दौड़ूलु कहीं बहुत पत्थर गोड़ी होके से स्टाडियम थिला एबे से स्टाडियम सर बहुत भल हो जाइए तो आउ से मते नहीं थिला मो स्कूल रे जते मो 7th क्लास पढ़ुथली से मो बड़ भौणी प्रतिमा मिश्र सी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल चैंपियन थिला 100 200 400 करूला तो मते से रनिंग लाइन रे से मते नहीं जाइथिला ता संगे दौड़ी दौड़ी मु जाइथिली आ सेही मते ही एई लाइन को आनी देछि इम्फा जाऊ मते एते मन पके के एठी के नहीं आसी समस्त आपन को समस्त सामना रे मते आज ठिया करचंती सेटा होचे मोर बहुत गर्व सर बहुत बहुत धन्यवाद से कहती जेते आमे कष्ट करिबा सेते आमे पॉलिश हे थाउ सेते फाइन हे थाउ मैडम कर कहानी सेटा ही देखौची जोठी निजे गोड़ी उठे की दौड़ी की प्रैक्टिस करछंती सेति पई हुए तो एशियन मेडल रो विनर आम ओडिसा रो प्रथम महिला आम पई आपण प्रेरणार उत्स मैडम बहुत बहुत आमे विशेष भाव में आनंदित जे आज आपण आमर सम्मानित अतिथि होती बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँकर प्रचेष्टा रे आरंभ होइतिला सम्मानजनक एकलव्य पुरस्कार जहाँकर दिग्दर्शन रे सफलतार सह दीर्घ 30 वर्ष धरी आगे आसी आमर एही यात्रा ट्रस्टी इम्पैक्ट एंड चेयरपर्सन एकलव्य पुरस्कार कमिटी श्रीजुक्त बैजयंत पंडा महोदय को वर्तमान अनुरोध करी आम समस्त उद्देश्य रे निजर वक्तव्य रखिबे। 30तम एनुअल एकलव्य पुरस्कार विजयी कुमारी स्वास्ति सिंह एठी उपस्थित दुहे साइटेशन विनर आज आमर विभिन्न जगारू अतिथिगण आछंती विदेशरू मध्य आछंती। इट इज़ वेरी नॉस्टैल्जिक फॉर मी टू बी स्पीकिंग at the 30th annual Ekalavya Award ceremony. I remember it like it was yesterday when I had the honor
of, along with a few like-minded supporters, to start this initiative with the support of the Indian Metals Public Charitable Trust, of which I am a trustee, and I have since then been chairing the EKALABYA Award Committee. As you just heard Pranati ji pointing out, 30 years ago, it was a very different situation in India, and especially in a place like Odisha. There was no support. You heard how she used to run on fields that were not meant for training. She had to remove the pebbles herself. She didn't have kit, didn't have the equipment for it, didn't have sponsorship. That was the story in general. And that was a time when there wasn't adequate support either from the corporate sector. Even the government support was minimal. There were no sponsorships really. And so, although the trust had been doing a lot of good work already for 2 decades at that time, now it's 5 decades, the idea that apart from literature and health and education, we should also be promoting sports was very important, because Odisha has enormous talent. And so the EKALABYA Award is intended to promote, encourage, recognize, and give a boost to young sportspersons from Odisha or from elsewhere who are domiciled in Odisha. The EKALABYA Award winners over the past 3 decades have succeeded beyond our wildest dreams, have played for India, have made a name for themselves internationally, and have brought great glory to the nation and to Odisha. In the meantime, in the last 30 years, a lot has happened. Governments, especially the national government and even in the state, have stepped in and helped create world-class infrastructure. Here in Bhubaneswar, for instance, have started attracting world-level events of different kinds of sports. And Odisha is becoming recognized for the talent that it always had. But our dream in the Indian Metals Public Charitable Trust, and especially those who've been involved with the EKALABYA Award, is not yet satisfied. Because it is not just at the state level. We have enormous talent throughout the 30 districts of Odisha, throughout the 45 million people that constitute our citizenry. For example, I have many friends from Kendrapada here. Kendrapada has enormous talent in sports, and many young men and women have gone on to play for India in various sports, especially football. I want the same kind of infrastructure, the same kind of facilities, coaching, sponsorships, and support systems to develop in Kendrapada, in Mayurbhanj, in Sambalpur, in Koraput. A lot is happening. There are sports authorities, initiatives that are happening in many of these places, but we need to do even more. And so I thank all of you who have helped make the EKALABYA Award such a success that it is coveted. There are many young athletes and students in the back of this room who are either in the sports hostel or getting the benefit of coaching for some discipline or the other. And I hope some of you in the coming years will be on the stage here, winning this award and then going on to earn great laurels for Odisha and India at the national and international levels. Thank you very much. Dhanyavad. Jai Hind. Thank you very much, sir, for your inspiring and motivating words. आपणकर बलिष्ठ उद्यम एवं इम्पैक्टर सहयोगर हाथ जो आज क्रीड़ाविद मान एवं क्रीड़ा प्रेमी मान अनेक उत्साह देखा मिलूँ एवं आमर जो 30 वर्षर यात्रा रही आगक एमती जारी रहू आगक 50 वर्ष 100 वर्ष पूर्ति करूँ एकलव्य पुरस्कार अवार्ड एवं आपणकर दृढ़ इच्छा शक्ति एमती आम सहित रही था एति कामना कर बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजुक्त पंडा।
Now, ladies and gentlemen, the much awaited time has come. The time for the presentation of the first citation award. We are really proud to announce the first name. किंतु मु चाहिए आपण माने ऑडियो विजुअल माध्यम रे प्रथमे देखि नियंतु. Let's play it. सुश्री प्यारी खाखा राज्यर नाकरा महिला फुटबॉल खेलाड़ी सुश्री प्यारी खाखा भारतीय महिला फुटबॉल दलर जड़े भरोसायोग्य खेलाड़ी जूनियर स्तर आरंभ करी भारतीय महिला फुटबॉल दल में सामिल हेबा ही बयान करे तांको निष्ठा और एकाग्रतार कथा। अंतर्जातीय स्तर में जड़े माहिर सेंटर फॉरवर्ड खेलाड़ी भावे प्यारींकर स्वतंत्र परिचय रही। फेब्रुआरी 2021 रे तुर्कीर अलान्य ठारे आयोजित अंतर्जातीय टूर्नामेंट रे सर्बिया रूस एवं यूक्रेन विपक्ष मैच रे भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल दलर सदस्य थिले प्यारी। सेही वर्ष एप्रिल रे भारतीय महिला फुटबॉल दल जेतबेले उज्बेकिस्तान एवं बेलारूस विपक्ष रे मैच खेलुथिला सेतबेले प्यारी खाखांक प्रदर्शन थिला चमत्कार। पुणी अक्टोबर 2021 रे यूएई एवं बाहरीन टूर रे भारत जीतिथिबा 3टी बंधुत्वपूर्ण मैच रे 3टी गोल पोस्ट करी समस्तक दृष्टि आकर्षण करिथिले प्यारी खाखा। 2019 रे हांगकांग एवं इंडोनेशिया गस्त बेले प्यारींको महत्वपूर्ण अवदान जोगु भारतीय महिला फुटबॉल टीम 4टी जाक मैच जीतिबारे सफल होइथिला। उभय जातीय एवं अंतर्जातीय स्तर रे प्यारींकर एही कृतित्वपूर्ण अवदान को दृष्टि रखी इम्पैक्ट पक्षरु तांकु 2022 वर्षर साइटेशन अवार्ड पई योग्य विवेचित करा जायछि। आगकु आम राज्य एवं देश पई से अधिकरु अधिक गौरव आनिबे बोली आमर आशा और विश्वास। से होचंती आम राज्यर गर्व एवं गौरव अति परिचित नाकरा महिला फुटबॉल खेलाड़ी प्यारी खाका को वर्तमान में अनुरोध करी मंच उपर को आसबे एवं निजर साइटेशन अवार्ड रिसीव करेंगे। Today at EKALABYA PURASKAR Award giving ceremony, we at Impact have the proud privilege of celebrating your success by honoring you with a citation and a cash award of rupees 50,000 in recognition of your outstanding achievement at the national and international level. मु अनुरोध करी प्यारी आम समस्त किसी शब्द निश्चित कहबे। समस्त को नमस्कार। मु एठी आज आसिकी बहुत खुशी लगुच। ट्राए करी मु नेक्स्ट टाइम मोर बेटर परफॉर्मेंस करिया पाए। वर्तमान समय द्वितीय साइटेशन प्रदान करिबार एवं जी से सम्मानर अधिकारी से होछंती भारतीय पुरुष हॉकी दलर अन्यतम प्रमुख खेलाड़ी शिलानंद लाक्रा। तांको निमित्त प्रस्तुत ऑडियो विजुअल प्रथमे देखिबा। शिलानंद लाक्रा ओडिशार अन्यतम सुनामधन्य हॉकी तारका जातीय और अंतर्जातीय स्तर रे उत्तम क्रीड़ा प्रदर्शन करी देश और राज्य को गौरवान्वित करिसेंते। से 2016 रु ही तांको सफलतार यात्रा आरंभ हुए। शिलानंद हेउछंती भारतर पुरुष हॉकी दलर उज्ज्वलमय तथा सफल फॉरवर्ड प्लेयर। भारतीय पुरुष हॉकी दलर सदस्य भावरे निज इमेज को पक्का करिथिबा बेले युव क्रीड़ाविद को पई साजिछंती प्रेरणार उत्स। 2021 रे अर्जेंटीना विपक्ष रे 4टी अभ्यास मैच रे सीरीज जीतिथिबा भारतीय दलर सदस्य थिले शिलानंद। सेही बळी अप्रैल 2021 रे अर्जेंटीना रे FIH हॉकी प्रो लीग रे मध्य शिलानंदଙ୍କ अवदान थिला प्रशंसायोग्य। डिसेंबर 2021 रे षष्ठ मेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी रे ब्रोंज पदक हासिल करिथिबा भारतीय हॉकी दल रे से सदस्य थिले। उभय जातीय एवं अंतर्जातीय स्तर रे शिलानंद लाक्रांको एही कृतित्वपूर्ण अवदान को दृष्टि रखी इम्पैक्ट पक्षरु तांको 2022 वर्षर साइटेशन अवार्ड पाई योग्य विवेचित करा जायछि। आगकु आम राज्य एवं आम देश पाई से अधिकरु अधिक गौरव आनिबे बोली आमर आशा और विश्वास। अनेक अनेक शुभकामना शिलानंद लाक्रा को। तेबे आपन को आमे कहबाकू चाहूँ जे बेंगालुरु रे वर्तमान चलीथिबा सिलेक्शन कैंप पाई से व्यस्त थिबारु आज अनुपस्थित अछंती, किंतु तांको पाई तांकर ए अवार्ड रिसीव करिवे तांकर भाई आरब खेस। मो अनुरोध करबी आरब खेस मंच उपर को आसीबे एवं शिलानंद लाक्रांकर ए साइटेशन अवार्ड रिसीव करिवे। आवर एस्टीम्ड गेस्ट ऑफ ऑनर प्रेजेंटिंग द साइटेशन अवार्ड
ଶିଳାନନ୍ଦ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମେସେଜ ଆମ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା। नमस्कार, मु शिलानंद लाकरा सीनियर मैन हॉकी टीम जड़े सदस्य। एकलव्य पुरस्कार ओडिशार प्रत्येक क्रीड़ाविद मान प्रथम स्वप्न। वर्ष वर्ष धरी इम्फा यार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पुरस्कार प्रदान कर बहु खूब क्रीड़ाविद मान मनोबल और आत्मसम्मान बढ़ाई थाए। यही एकलव्य पुरस्कार विजेता आगक जाई अंतर्जातीय स्तर में बेस सुनाम अर्जन करने सह पदक जीति था। 30तम एकलव्य पुरस्कार विजेता मिस स्वाति सिंह एवं उपविजेता मिस प्यारी खाखा को मु अभिनंदन शुभेच्छा जनाऊँगी एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर। यही एकलव्य पुरस्कार रे मते मध्य उपविजेता भाव सम्मानित करिथिबारु मु बहुत खुशी एवं प्राउड फील करुअछि। मते सम्मान योग्य विवेचित करिथिबा विचारक मंडली को मु अंतररु बहुत बहुत धन्यवाद देवा सह मो कृतज्ञता जनाऊँगी। धन्यवाद। पुणी थे अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना शिलानंद लाकरा को। वर्तमान समय आस जाइछि एकलव्य पुरस्कार अवार्डिंग को सम्मानित करिवार। तांको पूर्वरु आसंतु ऑडियो विजुअलटी देखिनबा। स्वस्ति सिंह क्रीड़ा क्षेत्र में एक जाज्वल्यमान तारका। साइकेल रेसिंग तांको स्पोर्टिंग कैरियर को देछि एक भिन्न परिचय। विभिन्न जातीय एवं अंतर्जातीय स्तर में मेडाल परे मेडाल हासिल करी से ओडिशा तथा देश को करिसेंती गौरवान्वित। निजर विरल कृतित्व सहित आगक बढ़िछंती ओडिया झियो स्वस्ति सिंह। साइकेल रेसिंग रे निज देश पाई पदक पक्का करिबा जेमिति तांकर प्रथम लक्ष्य। आउ ताहा से विभिन्न प्रतियोगिता रे बारंबार प्रमाणित मध्य करिसेंती। स्वस्ति सिंह 25तम सीनियर नेशनल रोड साइक्लिंग चैंपियनशिप 2021 रो एलिट वुमेन 60 किलोमीटर मास स्टार्ट इवेंट रे स्वर्ण एवं 72तम नेशनल ट्रैक साइक्लिंग चैंपियनशिप 2021 रो वुमेन एलिट 10 किलोमीटर स्क्रैच रेस रे रौप्य पदक लाभ करछंती। सेहि बळी 72तम सीनियर नेशनल ट्रैक साइक्लिंग चैंपियनशिप 2021 रो वुमेन एलिट 3000 मीटर विभाग रे स्वर्ण एवं वुमेन एलिट 20 किलोमीटर रे रौप्य पदक हासिल करछंती। 2020 रे गुवाहाटी रे आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स रे 2टी स्वर्ण एवं गोटिए रौप्य पदक जीति चर्चा को आसीथिले स्वस्ति सिंह। उभय जातीय एवं अंतर्जातीय स्तर में स्वस्तिंकर एक कृतित्वपूर्ण अवदान को दृष्टि रखी इम्पैक्ट पक्षरु तांकु 2022 वर्षर एकलव्य पुरस्कार रे सम्मानित करा जायछि। तेबे आसंतु तांको सम्मानित करबा। आम राज्यर गर्व और गौरव साइकेल रेसिंग को निजर स्पोर्टिंग करियर भाव में ग्रहण करी से राज्य तथा देश पाई सुनाम अर्जन करिसेंती। उभय जातीय एवं अंतर्जातीय स्तर में निज पाई एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर पारछंती। लेडीज एंड जेंटलमैन 30th एकलव्य पुरस्कार 2022 अवार्डी स्वस्ति सिंह। कंग्रेचुलेशन स्वस्ति। मु अनुरोध करी स्वस्ति आम समस्त किसी शब्द निश्चय कहबे। ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री पंकज अडवाणी सर, श्रीमती प्रणति मिश्रा मैम, श्री बैजयंत पंडा सर एंड श्री किशोर महांती सर। माई सेल्फ स्वस्ति सिंह, इंटरनेशनल साइक्लिस्ट। I am from Rourkela. Winning the EKALABYA Puraskar is the first dream of all the young sports person of Odisha. The award boosts our morale. Many EKALABYA Puraskar winners have achieved great glory international and international levels. I would like to congratulate the citation winner Shilanand Lakra and Pyari Khaka. There is no doubt that many young athletes like me will be encouraged to take the path of success in this noble endeavor. I am thankful to the members of EKALABYA Puraskar committee for finding me worthy of this prestigious award, and I am also grateful to the jury members. I would like to thank my current coach Shri VN Singh sir and my initial coach Shri Sushil Kumar Das sir for training me, and I would like to thanks to Vinil Krishna sir, Director of Government of Odisha, Sports Government of Odisha,
for giving me the financial support to buying the equipments, etc. And I would like to special thanks to my parents for encouraging me every day to be a better sportsman, also a better human being. That's all for today. And at last but not the least, I would like to thanks all of you again. Jai Hind, Bande Utkal Janani. Thank you so much. Many congratulations, Swasti, and thank you so much for bringing glory to our state and our country. वर्तमान समय आमर मान्यवर मुख्य अतिथि मुहर आम कि शब्द निश्चित भाव में शुणा आम गर्वित जे आम गहणार आज उपस्थित अच्छा आमर ऑनरेबल चीफ गेस्ट जी कि भारत पर गर्व आम भारतर जड़े सुपुत्र जहाँ पाखे एत गुड़े नेशनल इंटरनेशनल मेडल्स रही चैंपियनशिप रही जहाँ को ग्रहण करने जहाँ को अर्जन करने आम समस्त आम मध्य अनेक जनक एक स्वप्न सहित सामान किंतु आज से ओडिशा माटी को एवं आमर परिवार को आहरी शोभावर्धित करिसेंती निजर उपस्थिति द्वारा. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम फॉर द एड्रेस आवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट इंटरनेशनल बिलियर्ड्स प्लेयर पद्म भूषण श्री पंकज अडवाणी. भारतर विशिष्ट बिलियर्ड्स तथा पूर्वतन स्नूकर प्लेयर पंकज अडवाणी इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन IBSF रो 25 थर विश्व विजेता होउछंती पंकज. से 17 थर बिलियर्ड्स वर्ल्ड टाइटल मध्ये जीतिछंती. Well done, he's given himself a lifeline. विश्व रे सबुठारु अधिक थर वर्ल्ड चैंपियन हेबार सौभाग्य लाभ करिछंती पंकज अडवाणी. मात्र 18 वर्ष बयस निजर प्रथम वर्ल्ड टाइटल हासिल करने सहित 3 थर IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप हासिल करिछंती पंकज. दुनियार सर्वश्रेष्ठ बिलियर्ड्स खेलाड़ी होउछंती पंकज अडवाणी. उभय IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप एवं वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप लाभ करिबारे से होउछंती एकमात्र खेलाड़ी. पंकज अडवाणी को द प्रिंस ऑफ द इंडिया, द गोल्डन बॉय एवं द प्रिंस ऑफ पुणे भाव में मध्य अभिहित करा जाय. क्रीड़ा जगत रे चमत्कार प्रदर्शन पाई भारत सरकार पक्षरु तांको अनेक सम्मान एवं पुरस्कार रे भूषित करा जायछि. 2004 रे अर्जुन अवार्ड, 2006 रे मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार, 2009 रे पद्मश्री एवं 2018 रे पद्म भूषण रे सम्मानित होइछंती पंकज अडवाणी. असामान्य प्रतिभा पाई पंकज अडवाणी को ना क्रीड़ा जगतर इतिहास पृष्ठारे स्वर्णिम अक्षर रे लिपिबद्ध होई रहइबो. Let's welcome, ladies and gentlemen, the golden boy of India, the master cubist, Padma Bhushan, Shri Pankaj Advani. पहली बार एक्चुअली मैं ओडिशा में आया हूँ एंड आई एम सो डिलाइटेड दैट इट्स फॉर अ स्पोर्ट्स इवेंट, अ स्पोर्ट्स फंक्शन टू सेलिब्रेट अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट, टू सेलिब्रेट ह्यूमन एक्सलेंस. 30 years of EKALABYA PURASKAR. So many athletes have come, they've won this award, they've gone on to achieve greater heights in international levels, national levels. ये जो शब्द है इम्पैक्ट, इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, जो इम्पैक्ट वाला शब्द है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है. बिकॉज आई बिलीव स्पोर्ट इज अबाउट इम्पैक्ट, अबाउट पावर, अबाउट इन्फ्लुएंस. हम लोग जब प्रैक्टिस करते, हम लोग ट्रेन करते, तो ऑफकोर्स वी वॉन्ट टू डू वेल, वी वॉन्ट टू विन, बट द इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन सोसाइटी, द पीपल हु सपोर्ट अस, द पीपल हु आर बिहाइंड द सीन्स. इन फैक्ट it's not just one person performing, it's a whole team together that comes to make sure that the athlete is in the best condition mentally, physically, spiritually, and motivated to achieve great heights. The level at which you all are playing today, it's so young. It will inspire all those athletes who are sitting here in this hall. It will inspire all the athletes who are training somewhere right now, not only in this state but across the country, across the globe, that we also will be here one day receiving this award and go on to achieve greater heights in our sport. Besides winning medals for the country, bringing glory to the state, it teaches us fairness, integrity and respect. Respect not only for your game but for your opponents. Respect not only for yourself but for the people who support you, for the media, for everybody who's been part of your journey since the very beginning. Fairness. Today, हम लोग स्पोर्ट्स क्यों खेलते हैं, हम लोग को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट क्यों है? बिकॉज वी कैन रिलेट, इवन इफ वी आर नॉट प्लेइंग अ स्पोर्ट, व्हेन वी वॉच अ स्पोर्ट वी सपोर्ट अ पर्टिकुलर प्लेयर और अ टीम, क्योंकि हम लोग का एक इमोशनल कनेक्ट बन जाता है.
तो sports teaches us all these things. And integrity, of course, क्योंकि without integrity we cannot evolve as sports people and as human beings also. And Swasti very correctly said that sport does not only define us in terms of achievements, but we also need to learn from what sport teaches us, and that's to become better human beings. The contribution that Impact has made over the years, not just 1-2 years, but 30 years now, and this will result in more and more achievers coming from this wonderful state of Odisha, and you know, as obviously this state has been home to the World Cup of hockey for years, many years. I hope Odisha becomes host of multiple world championships across different sports, which I'm sure in years to come will happen. As long as we have people like Jay Panda ji. When I started playing this game, क्योंकि स्कूल में हम लोग अक्सर आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते थे, क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, और जब मैंने बिलियर्ड स्नूकर को शुरू किया था तो ये लोग बोलते थे ये स्पोर्ट भी है क्या? They used to ask me this. Today, because of the support that I received from organizations just like Impact at the beginning of my career, I can proudly hold my head high and say कि I play a sport that has given India over 30 world titles. Multiple Asian Games medals, just like how Pranati ma'am has achieved at that level, inspiring women athletes. And it's so heartening to see that women athletes have now come up and are actually probably at the forefront, even ahead of the men in terms of bringing glory to our states and our country. And that itself is a huge shift in the way we perceive sport, in the way we perceive our roles, कि नहीं आदमी को सिर्फ करियर पे ध्यान देना है, औरत को सिर्फ घर पे अपना सब कुछ हैंडल करना है. But now things are changing. We are evolving as a society. And that's thanks to the changing mindset, thanks to the fact that we believe that we can be the best. Thank you. Thank you very much, Shri Advani, for your words. We have a lot to learn from you, how to be calm during the situations of pressure, how to be focused, how with continuous and consistent efforts we can achieve our goals and sometimes even achieve something that we have never even thought of or planned of. You are a great source of inspiration for all of us, for all the sports persons in Odisha and other states. Please keep being so. Thank you so much. Now, ladies and gentlemen, it's time for the photo session with our honorable guests on the stage, and I would request our EKALABYA Puraskar awardee and the citation awardee to kindly join us on the stage. Now it's time for a beautiful cultural performance on sports motivation. उड़ीसा की मिट्टी की युवा प्रतिभाओं का हार्दिक अभिनंदन। विश्व में देश का गौरव बढ़ाने वाले हमारे अनमोल कर्णधार का गुणगान करें। आइए हम सब उनका सम्मान करें। एकलव्य सम्मान से उनके मस्तक पर तिलक सजाएं। उड़ीसा के स्वर्णिम भविष्य ऊर्जावान युवाओं का मान बढ़ाएं। झुकना हमें आता नहीं, रुकना कभी सीखा नहीं, जब चल पड़े अपने कदम मुड़कर कभी देखा नहीं। हम विजय पथ पर अग्रसर नित तीव्र गति से निरंतर, उत्कृष्ट उत्कल के धवल उज्जवल युवा हम हैं सफल। विराम हमको क्या पता है, आराम से नाता नहीं, गतिमान है हम हर घड़ी, रुकना हमें आता नहीं। ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी शुरुआत है। आएंगे लाखों मंजिलें, बढ़ते रहें अपने कदम, चलते रहेंगे काफिले। धरती का सीना चीर कर हीरा निकाल लाए हैं। अंधेरों से लड़कर उजाला निकाल लाए हैं। पैरों में छाले भले पड़े,
होकर हताश तुम थकना मत, होंगे पड़ाव अनगिनत मगर मंजिल से पहले रुकना मत, मंजिल से पहले रुकना मत। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। ये विजय ही कर्तव्य है और मन में एक लव्य है। उत्कल मेरा कुल ग्राम है, हे देश तुमको प्रणाम है, हे देश तुमको प्रणाम है। सब चलते हैं दुनिया की इन राहों में, पर क्या करूं है नशा कोई हवाओं में। अब जमीन को छोड़ के मुझको बस हवा में उड़ने दो, उड़ने दो, उड़ने दो, अब मुझको उड़ने दो, उड़ने दो, उड़ने दो, उड़ने दो, उड़ने दो, उड़ने दो, अब मुझको उड़ने दो, उड़ने दो, उड़ने दो, उड़ने दो। जो पी लेगा बस एक बारी मेरे होठों दे पैमाने की हाल होएगा फिर उसका, ओ यार मेरे रब जाने। हम यार दीवाने तब होंगे, हाथों में सितारे जब होंगे, अरमा हमारे इस दिल के पूरे न जाने कब होंगे। अब जमीन को छोड़ के मुझको बस हवा